Hello student, in previous video I explained you about form tag, and in form tag I explained you radio button, checkbox, text box, password box, submit button and reset button. Now today I will explain you text area. Text area is also a subtype of form tag. Text area भी किसका पार्ट है? Form tag का ही पार्ट है. Now what is the use of text area? Text area is used to get मल्टी-लाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर. जब हमें कोई मल्टी-लाइन इंफॉर्मेशन यूजर से गेट करनी है तब हम क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट एरिया. फॉर एग्जाम्पल एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल फीडबैक, फॉर एग्जाम्पल कमेंट एक्सेट्रा. अगर आपको यूजर से कोई कमेंट लेना है, कोई फीडबैक लेना है, उनका एड्रेस इनपुट करवाना है, तब हम क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट एरिया. नाउ हाउ टू use text area? So first we open Notepad, because we use Notepad to write HTML coding. First tag HTML, then head tag. Head tag is used to give basic information about the web page. For example, title. Title is a subtype of head tag that is used to display title on title bar. Title bar पे जो title show होगा वो हम कहाँ लिखेंगे? Title पे. For example, text area. यहाँ पे मैंने text area लिख दिया क्योंकि आज का हमारा टॉपिक क्या है? Text area है. Then head tag close, body tag. Body tag is used to display content on web page. All the content that you want to display on web page, write down in body tag. If you want to change the background color of the web page, by default background color is white. If you want to change the background color of the web page, then write down one attribute of body bg color that I already explained you in previous videos. Then form tag. Then in form tag we use text area for multi-line input. Text area, rows equals to 5, calls equals to 10. Then write down address, comment, feedback that you want to insert. For example, then text area close, then form tag close, then body tag close, and then HTML close. There are two types of tag that I already explained you: container tag and empty tag. Container tag that contain both opening and closing tag, and empty tag that contain only opening tag. For example, example of container tag: HTML, head, title, body. And example of empty tag: BR, that is used for break line. Now save your file, click on file, then save. Then the save as dialog box will appear. Now choose the location where you want to save your file. For example, desktop. Then in file name, type the name of the file. For example, ass1.html.
.html is an extension of html file. अदरवाइज फाइल इज ट्रीटेड एज नॉर्मल टेक्स्ट फाइल. अगर आपने इसको .html से सेव नहीं किया तो ये आपकी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह ट्रीट होगी. नाउ क्लिक ऑन सेव. नाउ मिनिमाइज द नोटपैड विंडो and double click on HTML file. Now see the output. I am a good student of my school. This type of box is known as text area box. Okay, then what is the difference between text box and text area? Text box is used to get information in single line and text area is used to get information in multi-line. Is that clear? Okay, now I will explain you drop down list, about the drop down list, how to create drop down list in form tag. So first we open previous file in Notepad. Open with how to open HTML file in Notepad. Right click on file, then open with, then click on choose another app, then click on more apps and then select Notepad. Then OK. Now after text area use BR. BR tag is used for next line or to break a line, and BR is an empty tag that I already explained you. Now use select command to create drop down list. क्या यूज करते हैं हम? select command यूज करते हैं drop down list के लिए. Now in select tag we use option tag to create a list. जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊंगी तो उसमें जितने भी आपके आइटम्स होंगे, तो इफ यू वांट टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट देन वी यूज सेलेक्ट टैग एंड फॉर लिस्ट आइटम वी यूज ऑप्शन टैग इन सेलेक्ट टैग. सेलेक्ट टैग के साथ में हम क्या यूज करेंगे? ऑप्शन टैग, जिसमें हम क्या करेंगे? आइटम्स को डिस्क्राइब करेंगे. नाउ फर्स्ट if you want to create list of subjects, list of stream, then we use drop down list. Then first option we use commerce, then use again option tag and then write down second stream name, for example science, then option close, then third option tag for third stream arts, then option tag close, then select tag close. After writing all the items, close the select tag. Then to save a file, press Ctrl S or click on file and save. आप चाहें तो फाइल पे जाके Ctrl S भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज Ctrl S करके भी फाइल को सेव कर सकते हैं. अब सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं होगा क्योंकि फाइल एक बार ऑलरेडी सेव है. नाउ minimize the notepad file and double click on HTML file. Now see the output. Below the text area, one drop down list will appear, commerce, and display 3 items in drop down list, commerce, science and arts. Then choose the stream that you want to take. Click on arrow and choose the stream that you want to take. This type of
list. This type of input is known as drop-down list input. Okay, thank you.